Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. Jai Hind guys, welcome you on this class. I Nitin Mishra, and here in this class we'll have some exercise based on finding error. And here you can see on the screen question number 1 that is talking about some statements given there. If you read it, you will realize that this sentence is divided into 5 parts and you have to identify which one of the parts has the error. So if you read it, it says that ambulances arrived at the scene of the accident and took injured to the hospital. If you see, the statement is saying took injured to the hospital. So I guess in this question the very problem with the statement is that article the का इस्तेमाल किया गया है hospital के पहले, which does not exist I guess. यहाँ पर अगर आप देखो ध्यान से तो कह रहा है कि टू द हॉस्पिटल, जबकि जब भी हम प्राइमरी पर्पस के लिए किसी ऐसे प्लेस से एसोसिएटेड होते हैं तो वहाँ पे द आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता. सो प्रॉब्लम विल बी विद द choice number D, so D has the error. And if you see the question number 2, it says both optimists and pessimists contribute to societies. The optimist invents the aeroplane. आप यहाँ पे पैरेललिज्म देख सकते हो. The optimist invents the aeroplane. एंड अगर हम सेकेंड पार्ट पे जाएं तो ये कह रहा है कि पेसिमिस्ट द पैराशूट. यहाँ पे देखिए पैरेललिज्म नहीं है, तो यहाँ पर भी हमें डी पार्ट में भी द पेसिमिस्ट बोलना पड़ेगा. और पैराशूट बीइंग अ नेम ऑफ इन्वेंशन, यहाँ भी आर्टिकल द लगेगा. तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट कहेंगे कि ई पार्ट में डी पार्ट में एरर है और दोनों तरफ आर्टिकल द के यूज़ होंगे, द पेसिमिस्ट द पैराशूट. आई गेस एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे क्लियर हो सकती है कि यहाँ पे सही आंसर होगा दो पेसिमिस्ट दो पैराशूट, हेंस डी पार्ट को हम टिक करेंगे. अगेन गाइज वी हैव अनदर क्वेश्चन एंड इट इज हैविंग द सेम प्रॉब्लम ऑफ आर्टिकल द. आई गेस बिकॉज क्लास में हमने सीखा था कि जब भी पैरेलल स्ट्रक्चर में दो कंपेरेटिव डिग्री आती हैं तो पहली तो यहाँ दिख गई द हार्डर और दूसरी यहाँ पर आगे देख सकते हैं आप फास्टर. तो दोनों ही कंपेरेटिव डिग्री के पहले द लगेगा, द हार्डर द फास्टर. So I guess part D को हम टिक करेंगे. D part has the error. And now if you see the question number 4, it says have either of the two candidates. See, the subject is either of the two candidates. There are two candidates. We are talking about either of them. So वो singular use होगी, but यहाँ पे have का इस्तेमाल किया गया. That is why A part में error है. Instead of have हमें use करना चाहिए has. I guess आपको explanation यहाँ पे clear होगी. Part A में error है. And here you can see the question number 5, because in this question it says 2 miles beyond that building. आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 miles beyond that building. ये सब्जेक्ट नहीं है, ये है एडवर्ब ऑफ प्लेस. पोजीशन बता रहा है कि आप किस तरफ देख रहे हो. और आगे बता रहा है कि what was seen. अगर हम क्वेश्चन पूछते हैं तो आंसर आएगा dozens of anti-social elements. Now dozens of anti-social elements were seen, ना कि was seen. तो यहाँ पे आप देखिए प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल होगा बिकॉज हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल है. सिंस वी हैव अ प्लूरल सब्जेक्ट, ऑब्वियसली अ प्लूरल वर्ब शुड बी यूज्ड देयर. इन प्लेस ऑफ was we should write were, and this is how we can solve it. Or if you would like to solve it in another way, so we have a second way of solving this question. You can see we can say the statement in such another way, like dozens of antisocial elements were seen 2 miles beyond that building. तो आप इसे रिवर्स भी कह सकते हो. So answer will be part B is the error part. And here you can cross verify your answer that the very part which has the error is the part B. In place of was we should write were. Again we have another question, question number 6. This question is saying that my neighbor along with, we have first noun, then we have along with, then we have second noun, his 4 children. Obviously verb will agree to the first noun, which is my neighbor being singular. It should be is in place of are. So part B is the error part. And here is the answer. You can see in place of are we should write is. And again we have another question based on the same concept. He along with some of his friends. Since we have two nouns joined with
preposition with. So in place of are we can write is to have a better sense. Subject ही है तो obviously verb is होगी. And here you can see and cross verify your answer that in place of are we should write is, so answer is B part. Now it is time to move on towards the next question, question number 8. This question number 8 is talking about a meeting. The meeting of the board of directors took place a week after the company held a meeting with project financer to evaluate funds. That is, now just see, funds, a plural noun, relative pronoun that, then followed by a singular verb. Since we have a plural subject, obviously plural verb should be used in place of is. Better we write are. So part, I guess C could be the error part. And here we have the answer. Funds that is wrong. Funds that are being needed is correct. Now we have the question next, which is question number 9. This question has again 5 parts and we have to identify which one of them is wrong. If you read the question, you will realize the question is saying that the process of ravishing the figures of taxes to get additional revenue has begun. Has के साथ second form दी है, which is wrong. It should be has begun as third form, so D part is the error part. And now you can see the part D is the error part. Question number 10 is talking about a farmer. Farmers who grow the crop are worse hit as the investment they make on a crop is huge as compared to the profit. If you really read the statement, you will realize कि यहाँ पे as का इस्तेमाल हुआ है जो कि comparison करता है, but मुझे यहाँ पे cost चाहिए तो फिर हम यहाँ पे as का इस्तेमाल ना करके because का इस्तेमाल करेंगे. So I guess part B is the error part. And here you can cross verify your answer that really part B is the error part, because as को यहाँ पे because में change करना पड़ेगा. अगर ऐसा नहीं करते हैं तो ये as और ये as मिल करके comparison का sense देगा जो कि हमें नहीं चाहिए. Question number 11 is saying the school is made it. तो आप देख सकते हैं ये इस phrase ही गलत है. The school is made, it should be the school has made it mandatory. तो is का इस्तेमाल wrong, it should be has. The correct statement will be the school has made it mandatory for parents to send their children along with the report card signed by them, and hence part A is the error part. Now the question number 12. While these organizations have a strong traditional hold, the reason for forming a consortium in Asia is to encourage cultural diversity for their organization is wrong. These organizations होना चाहिए, so part D is the error part. And here you can cross verify your answer that part D is the error part as there का इस्तेमाल गलत है. These demonstrative pronoun का इस्तेमाल यहाँ पे सही होगा. Now we have question number 13. Question number 13 is talking about a statement containing 5 different portions. It says that the judge advised the government to have metered taxes across the state while recounting his personal experience where a taxi driver made him to wait. Made के बाद bare infinity आता है, to की ज़रूरत नहीं है, इसलिए made him wait हो जाएगा. सही आंसर part D will be the error part. And here you can cross verify your answer that part D is the error part. For the question number 14, we have a statement. It says after a complaint was filed, the police teams was given wrong. Police teams is a plural term, it should be were given. So you can cross verify the part B is the error part, and instead of was we should write were given. Now you can see the question number 15. It says on the second day of competition the contestants have done a situational analysis of the state and spoke. अगर आप यहाँ पे conjunction and को देखें then you can compare it कि right hand side में past indefinite tense है तो इसके left hand side में भी tense same होना चाहिए. Have done is wrong, it should be did. So I guess part B could be the error part. And hence you can see the part B is the error part, and the problem with the statement is कि have done का इस्तेमाल किया था फिर conjunction and लगा था. It should be did and spoke about. So we'll have a parallelism here. So guys, I hope कि आपको ये session clear हुआ होगा. We just did with 15 question in this session. So I just wish you a good luck. Have a fantastic academic journey. See you in the next class. Thank you. Have a great day. Jai Hind guys. SBI, one of India's most reputed banks. Do you have a dream to work in SBI as an officer? But with over 15 lakh plus students competing for around 2000 vacancies,
Selection becomes quite difficult without the right strategy at the right time. Therefore, Testbook Select presents SBI PO Crash Course Live Coaching, where you will get complete preparation for prelims and mains within 55 days. Also, get 145 plus interactive live classes to clear concepts, 5000 plus practice questions to analyze your performance, and 80 plus PDF notes for further revision. Start your preparation with India's best faculty who will help in confirming your selection. Don't wait. Enroll now in SBI PO Crash Course Live Coaching. Jai Hind guys, and welcome you on testbook.com. In this class we'll talk about the question based on finding errors. So I hope कि आपको ये वीडियो और सेशंस समझ आ रहे होंगे. If you have any doubt, feel free to connect me guys. You can see the first question on the screen. It says that in the following question some part of the sentence may have errors. Find out which part of the sentence has an error and select the appropriate option. If sentence is free from error, आप no error को भी select कर सकते हो. कह रहा है कि none of the volunteers has arrived. आप देखो यहाँ पे कह रहा है none, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास नाउन है प्लूरल, बट यहाँ पे वर्ब दिया हुआ है हैज, विच इज रॉन्ग. इट शुड बी हैव. एंड दिस इज हाउ यू कैन मार्क सेकंड पार्ट एज द आंसर चॉइस की आंसर होना चाहिए सेकंड पार्ट. अगर आप यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन के पहले अगर हम आंसर की बात करते हैं तो आप देख सकते हो आंसर होना चाहिए सेकंड पार्ट, बिकॉज हैज गलत है, हैव होगा. क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि द प्रिंसिपल टुगेदर विद द टीचर आर कॉल्ड टू द कॉन्फ्रेंस. नाउ आप देखो आपके पास पहली नाउन है, देन वी हैव टुगेदर विद, व्हेन वी हैव अनदर नाउन, तो वर्ब विल एग्री अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट नाउन व्हिच इज प्रिंसिपल, तो आर गलत है, इज होगा. एंड दैट इज हाउ अगेन सेकंड पार्ट हैज द एरर. In the third question, if you really see, the question says not only tea but also coffee. तो आप देखो not only but also के बाद verb आई है, तो noun जो पास में होगी I mean coffee के हिसाब से वर्ब एग्री करेगी. सो कॉफी के साथ आर नहीं आता, ये रॉन्ग हो जाएगा. इज विल बी द बेस्ट पार्ट. तो आप देखो इस तरीके से इस क्वेश्चन में आर का यूज होना गलत है, क्योंकि यहाँ पे पार्ट नहीं है तो हम कहेंगे आर जो है वो रॉन्ग है. अब चाहिए क्वेश्चन सेंटेंस रिप्लेसमेंट में आए, फाइंडिंग एरर में आए या फाइंडिंग करेक्ट में आए, तो आपको यहाँ पर इस यूज को समझना है कि नॉट ओनली बट ऑल्सो के बाद वर्ब का एग्रीमेंट हमेशा सेकेंड नाउन से बनता है. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन. इट says that Kalpana Vishwanath is one of the founder of SafetyPin, an app that allows you to report harassment and feelings of threat in and around the city. तो आप अगर यहाँ पे ध्यान से देखो तो आप ये रियलाइज करोगे कि आपके क्वेश्चन में जो पार्ट एरर है दैट इज वन ऑफ द फाउंडर्स, बिकॉज फाउंडर के साथ एस का इस्तेमाल होना चाहिए. वन ऑफ के बाद नाउन हमेशा प्लूरल होती है, एंड दैट इज हाउ सही हो जाएगा वन ऑफ द फाउंडर्स. एंड दैट इज हाउ जो हमारा पार्ट एरर है दैट इज पी. एंड हियर यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर दैट पार्ट बी इज द एरर पार्ट, बिकॉज यहाँ पे फाउंडर के साथ हमें एस का इस्तेमाल करना होगा. देन वी हैव अनदर क्वेश्चन. इट सेज दैट सेंट्रल बैंक्स सिग्नल दैट इट विल मूव टू अ न्यूट्रल liquidity stance from a deficit stance, hint at more liquidity in the system in future. Now if you really see the question you will realize that कि आपके इस question में verb का इस्तेमाल किया हुआ है hint, जबकि हमारा subject है signal which is singular. तो आपके subject के according यहाँ पे hint के साथ s का इस्तेमाल करना ज़रूरी है. तो आप देख सकते हो कि आपका statement Q एरर पार्ट है, Q हैज द एरर, तो आंसर हो जाएगा Q पार्ट. एंड गाइज अगर हम थोड़े आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 6 पर जाएं तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन 6 कह रहा है कि द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट. चूंकि आर्टिकल एक बार लगा है और नाउन 2 बार कॉल हुआ है, इसका मतलब है ये 2 नहीं बल्कि एक ही लोग है, जो प्रेसिडेंट भी है और वाइस प्रेसिडेंट भी है. तो वर्ब गलत हो जाएगा, वॉस का इस्तेमाल सही हो जाएगा और पार्ट सेकंड हो जाएगा करेक्ट पार्ट. And now if you really see the question number 7, it says the prime minister as well as his followers. तो मीटिंग में फॉलोवर्स तो होंगे नहीं, ऑब्वियसली बात हो रही है प्राइम मिनिस्टर की, तो वर्ब का एग्रीमेंट फर्स्ट नाउन के हिसाब से हो जाएगा, वर्ब गलत हो जाएगा, was सही हो जाएगा. And again in the question number 8, if you really see, it says an important part of my life have been people who stood by मी. जरा सोच के देखो आप, एन इम्पॉर्टेंट पार्ट की बात कर रहा है, हैव बीन लगाया है, हैव इज रॉन्ग, इट शुड बी हैज. एंड दिस इज हाउ यू कैन सी दैट दिस क्वेश्चन हैज द एरर.
चूंकि आपने इसको सेपरेट नहीं किया है तो इस तरीके से आप पार्ट अंडरलाइन कर सकते हो। यहाँ हम इस क्वेश्चन को इसलिए विजिट करें ताकि हम एक ट्रू जस्टिस कर पाएं कि क्या हम क्वेश्चन पढ़ के उसका एक एरर रॉन्ग पार्ट आइडेंटिफाई कर पाते हैं या नहीं। एंड इन द सेम वे वी हैव क्वेश्चन नंबर 9, इट इज आस्किंग मेमोरीज, जो कि प्लूरल है उसके साथ लगाया है वॉस, तो गलत है, सही हो जाएगा वर। देन वी हैव अ क्वेश्चन व्हिच सेज दैट संस्कृत एज वेल एज उर्दू आर ऑफर्ड। आप जरा देखो, आर लगाया है, एज वेल एज से दो नाउन जुड़ी है, तो वर्ब का एग्रीमेंट पहली नाउन से होगा, संस्कृत पहली नाउन है तो आर गलत, इज सही हो जाएगा। And guys, then we have one other question. It says that many analysts say that if it was, आपको पता है if के बाद hypothetical situation के लिए was नहीं, were का इस्तेमाल किया जाता है, so answer will be A. Then we have another question, and this question is asking the onus are on India to rethink on a long-term basis how the recalibrate its relationship with नेबरिंग कंट्रीज। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो यहाँ पे ओन्स की बात कर रहा है जो कि सिंगुलर एंटिटी है, तो यहाँ पे आर का इस्तेमाल गलत हो जाएगा। एंड दिस इज हाउ द करेक्ट स्टेटमेंट विल बी ए। देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज सेइंग द वुंडेड मैन वाज बीइंग हेल्प्ड बाय सम बॉयज। अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो मैन प्लूरल है और उसके लिए वाज लगाया है, तो ये गलत हो जाएगा, सही हो जाएगा वर। A part में error हो जाएगी। Now we have another question. This question is asking the e-commerce company are launching awareness campaign to educate as well as warn their external partners. अब कंपनी की बात कर रहा है और यहाँ पे आर लगा रहा है, तो देखिए ये भी illogical है, इसका इस्तेमाल सही होगा। Now we have another question which is question number 15 and is asking the quality of mangoes. यहाँ mangoes की नहीं quality की बात कर रहे हैं। Noun preposition noun हो गए तो verb का agreement पहली नाउन से होगा जो कि है क्वालिटी, क्वालिटी के हिसाब से वर गलत, वॉस का इस्तेमाल सही हो जाएगा। तो गाइज इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चंस को किया, इसमें हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के इस्तेमाल किए, हमने नाउन के इस्तेमाल किए, वर्ब के इस्तेमाल किए, कंसेप्ट। तो आपको जो चीज़ें यहाँ पे समझाई गई, आई बिलीव आपको इसके एप्लीकेशन भी समझ में आए होंगे। So I just wish you a good luck, have a fantastic academic journey, do well in your preparation। और कोई भी डाउट हो राइट मी ऑन nitin.mishra@testbook.com। शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में गैप नहीं होना चाहिए गाइस। तो इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। सिलेक्शन आपको बिल्कुल इस बार अचीव करना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। खूब मन से पढ़ाई करिए गाइस। माय बेस्ट विशेस आर विद यू। हैव अ फैंटास्टिक जर्नी ऑफ एकेडमिक। थैंक यू। जय हिंद गाइस। SBI, one of India's most reputed banks. Do you have a dream to work in SBI as an officer? But with over 15 lakh plus students competing for around 2,000 vacancies, selection becomes quite difficult without the right strategy at the right time. Therefore, Testbook Select presents SBI PO Crash Course Live Coaching, where you will get complete preparation for prelims and mains within 55 days. Also, get 145 plus interactive live classes to clear concepts, 5,000 plus practice questions to analyze your performance, and 80 plus PDF notes for further revision. Start your preparation with India's best faculty who will help in confirming your selection. Don't wait. Enroll now in SBI PO Crash Course Live Coaching. जय हिंद गाइस, वेलकम ऑन दिस क्लास। इन दिस क्लास विल प्रोसीड द क्वेश्चंस जो हमने पिछली क्लास में किए, उसके आगे क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे। सो यू कैन सी द क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। इट इज क्वेश्चन नंबर 17। इट सेज दैट अ न्यू रिसर्च हैज शोन दैट किड्स हु हैव अ हाई बॉडी मास इंडेक्स आर मोर लाइकलियर टू हैव high blood pressure, cholesterol, and blood insulin levels by the time they reach adolescence. If you read this question, you will realize that we have a comparative degree of the very adjective which is likelier. This should not be there. Likelier is a wrong use in this context, I guess. So choice C, part C could be the error part. और अगर इसके आंसर पर जाएं तो let's cross check the answer. And hence you can see the part C which is likelier is a wrong use. Likely would be the best use for this question. So this question में C part will be the error part. And again for the question number 18, the question says the consumer forum directed the mobile company to compensate a complaint for, which is wrong. Complain against होता है तो आप कह सकते हो part B में error है. And here you can cross check your answer. Part B has the error. For का इस्तेमाल गलत है, अगेंस्ट का इस्तेमाल किया जाना चाहिए।
And next question is question number 19. Question number 19 says people whose performance peaks in morning are better position for career success. If you look at here, are better, are के बाद आपको पता है verb की third form आती है, so are positioned is should be there, position यहाँ पे गलत है, position होना चाहिए. And now you can cross check your answer. Position is a wrong use because we have a verb of to be that must be followed by a verb third form. तो position का इस्तेमाल सही होगा and hence B part is the error part. And here in the question number 20, if you look at the statement, it says the economic structure of slum areas in such that children, especially girls, are required to help in the household work and also perform there. अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ कह रहा है कि वो एक तो घर पे काम करती ही हैं एंड ऑल्सो इसके अलावा वो अन्य काम भी करती हैं. तो यहाँ पे देयर का इस्तेमाल गलत है, अदर का इस्तेमाल होना चाहिए. सो पार्ट डी इज द एरर पार्ट. एंड हियर यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर. यू कैन हैव एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्वेश्चन कि देयर का इस्तेमाल गलत है, अदर का इस्तेमाल होना चाहिए. And for the question number 21, it says either Rohan or his friends. चूंकि हमारे पास either और है तो obviously verb जो है वो singular होगी. Was होना चाहिए, वर का इस्तेमाल किया है, so we should use was instead of were. And here is the answer. You can cross check it. आपको यहाँ पे पता चल सकता है हमारी जो verb थी वो were थी, होना चाहिए was because हमारा जो second noun है, nearest noun है, वो singular है. And question number 22, it says when you will find out. ये एक effect हो गया और उसके बाद फिर से दूसरा effect दिया, you will become able. Obviously two future cannot be together. Two effects cannot be together. If we have one effect, there must be one cause. तो हम यहाँ पे when you will find out को wrong कहेंगे. It should be when you find out. And here we can see that the question has a part wrong. It should be in present tense instead of future tense. तो better हो जाएगा when you find out. तो इस तरीके से हम a part में error कहेंगे. Question number 23. Even after so much years of independence, the poor in India continue to suffer socially as well as economically at different levels in different forms. And if you really look at the question, it says even after so much years, much shows quantity. That is why it cannot come before a plural noun. It should be many years instead of much year. So error is in part A. And here you can see much का इस्तेमाल wrong है, many years होगा, plural noun के साथ much का इस्तेमाल नहीं हो सकता, many का इस्तेमाल होगा. Question 24 says at present China is the world's leader manufacturer of environment friendly products such as electric cars and bicycles. So if you see the question, आपको यहाँ पे समझ आएगा कि वर्ल्ड्स लीडर मैन्युफैक्चरर, ये जो पार्ट है ये एब्रप्ट है. या तो होना चाहिए वर्ल्ड्स लीडर इन मैन्युफैक्चरिंग या फिर वर्ल्ड्स लीडिंग मैन्युफैक्चरर. So this is how B part has abruptcy and will mark B as the error part. And you can see leading manufacturer एक अच्छा यूज हो सकता है. So B part में हमने एरर कही और B part एरर है. एंड फॉर द क्वेश्चन नंबर 25 आप देख सकते हैं नो सूनर डिड के साथ V1 आता है बट यहाँ पे V2 दिया है विच इज रॉन्ग. तो B पार्ट में एरर है. अगर हम यहाँ पे सही आंसर पर जाएं तो शायद आप देख सकते हो एक काम यहाँ पर पहले हुआ है, दूसरा काम बाद में हुआ है. जो काम पहले हुआ है उसे अगर हम करेक्ट करना चाहे तो हम वापस आएंगे पार्ट ए में, डिड को गलत कहेंगे, डिड की जगह हैड करेंगे ताकि ये ओपन जस्टिफाई कर जाए और हम ये समझेंगे कि शायद गेट का ओपन होना पहले हुआ और उसके डॉग का रश आउट करना बाद में हुआ. तो जो काम पहले हुआ पास्ट परफेक्ट, जो काम बाद में हुआ पास्ट इंडेफिनिट. दिस इज हाउ पार्ट ए इज द एरर पार्ट. Now we have another question. It says Professor Suman was fascinated by insects and the more she studied their habits, greater was her fascination. Now you can see two comparative degrees has come together. तो आप यहाँ पे देख सकते हो देयर हैबिट्स के पहले जो यहाँ पे दिया हुआ है मोर, उसके पहले आर्टिकल द है तो ग्रेटर के पहले भी द होगा, इसलिए डी पार्ट में एरर है. एंड हेंस द आंसर विल बी डी पार्ट. ग्रेटर की जगह द ग्रेटर होगा ताकि हम पैरेलल स्टेटमेंट फॉर्म कर पाएं, द मोर the greater. Question number 27 says our team's performance in the last few domestic and international game is fairly ordinary and below our stature. And now if you see the question, आपको लगेगा last few means बहुत बार की बात कर रहा है तो is की जगह has होना चाहिए. तो has been fairly ordinary would be the best use. So
ऑब्वियसली पार्ट सी इज़ द एरर पार्ट, और हम सी पार्ट में एरर कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट आर मेकिंग वेव्स थ्रू आउट द वर्ल्ड एंड देयर आइडियाज़। आगे कंजंक्शन एंड लगाया है, पैरेललिज्म फॉलो होगा, यहाँ पे आर मेकिंग है तो यहाँ भी एंड आर यील्डेड पैसिव वॉइस नहीं, आर यील्डिंग होना चाहिए ताकि हम इन दोनों पार्ट्स को इक्वल पैरेलल बना पाए। यहाँ पर अगर आईएनजी का इस्तेमाल हुआ है तो यहाँ भी आईएनजी का इस्तेमाल होगा। एंड दिस इज हाउ यू कैन सी दैट डी पार्ट में सी पार्ट में एरर है, एंड इन्वेंशंस आर yielding could be the best use. And here you can see the correct answer is are yielding, so C part is the error part. Question number 29 says she immediately quit the job in which neither skill nor knowledge was required. होना चाहिए, were required लिखा है, so it is wrong. And here is the answer. आप चेक कर सकते हो, C part में D part में error है, was की जगह was होना चाहिए वर की जगह। एंड नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन गाइज। सी इट सेज गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स ओन एनर्जी। वी हैव अ प्लूरल टर्म, तो यहाँ पे इट्स नहीं देयर होना चाहिए। एंड दिस इज हाउ वी कैन मार्क बी पार्ट एज द एरर पार्ट। इट्स रॉन्ग है, देयर ओन एनर्जी विल बी द बेस्ट यूज। सो गाइज हमने क्वेश्चंस किए, हमने ये देखे कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं सीरीज़ में, हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस किए। तो आई होप यू लाइक द क्लास, हैव अ फैंटास्टिक academic journey, work hard, see you in the next class. If you have any doubt, write me on nitin.mishra@testbook.com. Jai Hind guys. SBI, one of India's most reputed banks. Do you have a dream to work in SBI as an officer? But with over 15 lakh plus students competing for around 2,000 vacancies, selection becomes quite difficult without the right strategy at the right time. Therefore, Testbook Select presents SBI PO Crash Course Live Coaching, where you will get complete preparation for prelims and mains within 55 days. Also, get 145 plus interactive live classes to clear concepts, 5,000 plus practice questions to analyze your performance, and 80 plus PDF notes for further revision. Start your preparation with India's best faculty who will help in confirming your selection. Don't wait. Enroll now in SBI PO Crash Course Live Coaching. Jai Hind guys, and welcome you on Testbook.com. I am Nitin Mishra, and in this session we will talk about finding errors and the approach, कैसे उसे solve करना है और किस तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जाएंगे डायरेक्शन पार्ट पे कि आखिर डायरेक्शन क्या है। If you see on the screen you can find in the following question a part of the sentence is given in bold. आपको sentences में से एक part bold में मिलेगा। It is then followed by 3 statements which try to explain the meaning of the phrase given in bold. Choose the best set of alternatives from the given option given below each question which explains the meaning of the phrase. आपको ये एक ऐसा पार्ट ऑफ द एरर है जो आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आई बिलीव लगने वाला एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन उठ सकते हैं और आते हैं। तो लेवल के हिसाब से अगर हम देखते हैं एग्जामिनेशन को तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। एंड इन दिस क्वेश्चन गाइज आपको फ्रेज जो कि कलर्ड है और बोल्ड है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा हो, कि मीनिंग बतानी है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है 1 2 3 4 5 में से जो इस बोल्ड और कलर्ड पार्ट की मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है। मीनिंग बताने वाले पार्ट को बताना, ऐसे स्टेटमेंट के क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट और फाइंडिंग एरर के वैरायटी के अंदर ही आते हैं। भले ही आपको इसमें एरर नहीं बतानी, बट आपको इसमें बताना है कि बेस्ट मीनिंग कौन डिस्क्राइब कर रहा है बोल्ड पार्ट की। अगर आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखोगे तो आप ये बात रियलाइज कर पाओगे कि हमारा जो बोल्ड पार्ट है दैट इज प्रोलॉन्ग्ड टीथिंग ट्रबल। दैट बेसिकली कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम आई बिलीव सेकंड statement, no intention of criticism. It is to be noted that the sustained short term problem, teething problem कैसी होती है, short term problem होती है, of the coast guard resulted because Navy considered the service a poor correspondent, and this is how I guess we can answer second choice as the correct alternative for replacing the bold पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। सो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अगर हम प्रोलॉन्ग्ड टीथिंग ट्रबल्स की बात करते हैं तो वो शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम की ओर रेफर करता है हमें। एंड हियर यू कैन क्रॉस वेरीफाई योर आंसर, दैट आंसर ओनली कुड बी चॉइस नंबर 2 विच इज
ऑप्शन नंबर सेकंड, और इस तरीके से आंसर हमारा सेंटेंस सेकंड, चॉइस नंबर 2 विल बी द बेस्ट आंसर. एंड इन द सेम वे इफ वी लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2, देन व्हाट bold and colored part do we have? It is war. Hysteria is part of Chinese psychological warfare. And अगर हम यहाँ पर देखें तो शायद आप ध्यान से देखो, चॉइस नंबर 2 अटैकिंग इट्स काउंटर पार्ट, इस पूरे के पूरे मीनिंग को, बिकॉज यहाँ पे बोला है साइकोलॉजिकली, तो आप देखो इमोशनली एंड इंटेलेक्चुअली फॉर्म्स द पार्ट ऑफ चाइनीज साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एंड हेंस आई गेस सेकंड चॉइस इज बेस्ट सुटेबल रिप्लेसर विदाउट ऑल्टरिंग द मीनिंग. सो वी कैन आंसर choice second, which is given in the option 1, and hence option 1 will be the answer. And guys, you can cross verify your answer that your answer is first, only second is correct. If we see the question number 3, then question number 3 says, for India, connectivity towards the east and particularly important feature of the BIMSTEC concept, as it fills the gap in India's effort to open out the direction. अगर आप ध्यान से देखो, टू ओपन आउट इन द डायरेक्शन का बेसिक मीनिंग आपको यहाँ पे दिखाई देगा, दैट इज, अगर आप ध्यान से देखते हैं तो कि कनेक्टिविटी टूवर्ड्स द ईस्ट इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द बिमसेक्ट कंसेप्ट एज इट फिल्स द गैप बिटवीन इंडियाज एफर्ट टू स्ट्रेच इट्स रीच दैट रन. यानी आप देखो वापस इस सेम मीनिंग को यहाँ पे आप डिस्क्राइब होते हुए देख लोगे. इन द सेम वे अगर हम बात करते हैं थर्ड में, तो थर्ड में भी कह रहा है इट helps in broadening its range. चाहे बोले stretch its reach, चाहे बोले broadening its range, या बोले to open out in the direction. तीनों की meaning same है, and this is how second and third will be the answer, which is choice 4. So choice 4 will be the answer. And here you can cross verify your answer that choice number 4 is the best suitable choice for this question. If you look at the question number 4, it says that if life is pulling you back, it simply means that it is gonna launch you into bigger things, and this is the bold and colored part, and we are supposed to answer this question, and the very options are 1, 2, 3. अगर हम ध्यान से देखें थर्ड ऑप्शन को, जो कह रहा है it is considered that when life tastes our patience with the serious vibes like sorrow, trials and worries, it simply means to direct us experience something good and productive. And this is how I guess only 3, which is option 2, can be the answer. And if you really want to cross verify, now here you can cross verify, I guess the choice 2 is the best answer for this question, which is question number 4. And then for the question number 5, we have a bold part written as virtual eclipse in the midst of raging agitation has turned the clock back. And अगर हम बात करते हैं मीनिंग की, तो आप देखो यहाँ फर्स्ट चॉइस में साफ साफ कह रहा है द GTA's loss of relevance over the past 2 months and its tactic decline and levied agitation has brought those old memory back. Turned the clock back basically means old memories back. Hence first statement goes with the choice which is given in the first option. Option 1 will be the right answer for this question. If you really want to cross verify, you can cross verify it in the slide. You can see that the answer is 1 as the best answer. And if we ask about question number 6, then here is the question number 6, and the bold word is the result being a mixed bag. And अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो आप ये रियलाइज कर पाओगे कि हमारे स्टेटमेंट में जो पार्ट इस मीनिंग को डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज आई गेस फर्स्ट क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है इट इज कस्टमरी विद ऑल गवर्नमेंट्स टू एक्नॉलेज डाइवर्स असॉर्टमेंट अटेम्प्टिंग अ बैलेंस एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोवेस पॉलिटिकल डिस्टिंक्शन कास्ट रीजनल कंसिडरेशन etc थ्रू सच एक्सरसाइजेस. तो मिक्स बैग को आप देखो यहाँ पे सभी चीज़ों को बोला, जैसे बैलेंस करना है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोवेज में, then political distinction, caste, region and consideration. So ये mixed bag को justify कर रहा है फर्स्ट वाला. अगर हम थर्ड की बात करें, as it customary with all governments such as exercise attempt a balance of, again देखो आप सारे areas को cover कर लिया, and that is how first and third will go, which is given in the option number 3, and hence option number 3 is the best answer for this question. And you can cross verify it. आप ध्यान से देख सकते हो कि आपके question में सही आंसर होना चाहिए choice number 3. And for the question number 7, we have another word trapped in a
vicious cycle of poverty, which is the bold and colored part. But अगर आप यहाँ पे अपने suggestion को देखोगे तो आप realize कर पाओगे that the choice which is second, I guess, and third goes with the theme of the very phrase, because trapped in a vicious cycle of poverty basically mean in particular status once enjoyed by Indian farmers has been replaced by a series of impoverishment that continues to exist generation after generation, as according to macro and micro data their earning hurdles hardly cover the cost of cultivation. Now अब जरा देखो यहाँ सेकंड ने अपने आप को जस्टिफाई किया सेम एज विद द थर्ड, बिकॉज यहाँ पे कह रहा है द वेब ऑफ इंडिजेंस विदाउट एनी स्केप रूट एज अकॉर्डिंग टू मैक्रो they barely cover the cost of cultivation. So in both the ways you can see the uses can easily be seen here. So choice number 2 and 3, which is I guess option number 4, is the best answer for this question. Then guys, we have another question number 8. The dichotomy is the striking feature. And अगर हम यहाँ पे बात करते हैं choices की, first, second, third choice मुझे दी है. And among these 3 choices अगर हम किसी एक को चुनते हैं, that must be only choice number 1. Why? Because it says an estimated 25% of our population has access to the latest technology, forming economically advanced populace, while the rest still lives a savage life. It makes the difference more evident. And now आप देख सकते हो meaning justify हो रही है 1 में, so only 1 will be the correct answer. And here you can cross verify that choice 1 is the best answer for this question. And it is time to move on towards the question number 9. It says that the phrase which is bold and colored is get down to brass tacks. अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो choice number 2 है, that is the best choice, because it says as the luxuriant ceremony and display of 8 Kimi roadshow in Gujarat, it is over and the time has come to discuss most relevant fact and address some of the issues to assist closer ties between India and Japan, even though the two leaders and militaries from closer bonds. Now this is how you can see the very word explained in the best way in the second sentence, and hence will be the answer, and the answer will be choice number 2. Then we have next statement as spoon fed. अगर आप यहाँ पे choices को देखो, then you will realize that choice number 2 says if such a new entity expect to be treated with excessively solicitude by central government doles, it would trigger the similar demands from different part of the country. 2 goes. अगर हम थर्ड की बात करते हैं, certainly similar the demands would come up from different parts of the country if such many entities expect and benefit provided to. तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरीके से सेकंड और थर्ड में मीनिंग डिस्क्राइब की जा रही है, which is choice number 4. That is how answer will be choice number 4, guys. And you can see the correct choice is choice number 4, second and third are correct. So guys, आपने देखा किस तरीके से आज के टाइम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे, they are not only of errors finding correct statement, but also they are asking for the very part which is bold and can be replaced with the correct one, or you are asked to answer the best meaning. क्या हो सकती है बोल्ड पार्ट की बेस्ट मीनिंग? तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं, एंड आगे भी बहुत सारे एक्सरसाइजेस आएंगे जहां पर हम एरर फाइंडिंग करेंगे. थैंक यू, हैव अ फैंटास्टिक डे. जय हिंद गाइस.